Hello everyone. In the last lecture we discussed about photosynthesis and today we're going to discuss about chloroplast and its structure, a site of photosynthesis. Let's get started. So what is chloroplast? It is the site for photosynthesis. And chlorophyll pigment present in the chloroplast traps the sunlight, store it and utilize to produce a glucose, a macromolecule, a food of a plant. Guys, each organism is made up of cell, which is functional unit of our body and also called building blocks of a life. This cell contains various cell organelles. So let's clear one thing about it, means about the cell organelles, that cell organelles are of three kinds. One is single membranous, second is double membranous and non-membranous. सिंगल membranous organelles कौन सी होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरोक्सिसोम. डबल membranous कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. एंड द नॉन membranous is राइबोसोम. So we are going to discuss about double membranous organelle and that is chloroplast. It is the second most largest organelle and the first one is nucleus. Before discussing its structure you should know about its discovery. So let's see. Who discovered chloroplast? A scientist, Julius von Sachs. That in chloroplast CO2 is fixed and O2 is released. Friends, we have already discussed this reaction, that is atmospheric CO2 and water produces glucose and oxygen is released. This is only because of the sunlight. So Julius discovered that carbon dioxide is fixed and oxygen is released during the process of photosynthesis. Now let's see in detail the site of photosynthesis. It is the green plastid of eukaryotes. A question में arise के प्लास्टिड तो एपिडर्मल सेल्स और रूट सेल्स में भी होता है. सो मीजोफिल सेल में प्लास्टिड कैसे? सो क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड जो कि ग्रीन कलर का होता है और जहाँ पे photosynthesis होता है. You know the nucleus is the largest organelle but the second most largest organelle is chloroplast. Okay, and it is present in cytoplasm. In the last lecture we have seen this enlarged mesophyll cell which contains mitochondria and chloroplast. So chloroplast is present in cytoplasm. Chloroplast की quantity कितनी है? In higher plants 20 to 100 chloroplasts are present per cell, where in algae 1 to 2 chloroplasts are present per cell. Algae such as Chlamydomonas is having 1 chloroplast per cell and Zygnema is having 2 chloroplasts per cell. Now you know the site of a photosynthesis and the quantity of a chloroplast कि higher plants में कितनी होती है और algae में कितनी होती है. Okay. Now let's see the basic structure of a chloroplast. It may be oval in shape, it may be discoid in shape, or it may be spherical in shape. Such various shapes are there. The diagram you can see the innermost layer is the inner membrane. Outer one is the outer membrane. Both are known as peristromium. We will discuss it later. Then the colorless matrix is stroma in which various proteins enzymes are present. A disc shaped part is known as Thylakoid, placed one above the other like a stack of coins, which is known as granum. Single stack is granum and multiple stacks are known as grana. The breach between two granum is called lamella and it is present in stroma, so it is also known as Stroma Lamella, जो कि दो ग्रैनम को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं लैमेला या स्ट्रोमा लैमेला. दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, दैट इट कंटेन्स स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड, ग्रैनम, स्ट्रोमा लैमेला, outer and inner surface, commonly known as the peristromium. Now let's talk about the ultrastructure of a chloroplast. So the first one is peristromium. What is peristromium?
Chloroplast bounded by double layered unit membrane which is made up of lipids and proteins, lipoproteins. These membranes are smooth and differentially permeable. अब differentially permeable है means क्या है? Here you can see in the diagram that there is a outer membrane and inner membrane. आउटर मेम्ब्रेन के बाहर से जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर तो आएंगे लेकिन स्ट्रोमा में नहीं जा पाएंगे, और इनर मेम्ब्रेन से वो बाहर नहीं जा पाएंगे. कहाँ पे रहेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर. और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होती है दैट इज़ इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. और इसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस को और क्या कहा गया है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. पेरीप्लास्टिडियल स्पेस जो होती है वो कैसे होती है? दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. मीन्स उसमें जो कोई भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ना बाहर जा पाएंगे विदाउट परमिशन, ना स्ट्रोमा में जा पाएंगे. मीन्स क्या है? पेरिस्ट्रोमियम जो है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दे आर डिफरेंशियली परमिएबल. लेकिन जो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. विदाउट परमिशन नो मॉलिक्यूल कैन गो आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट और इन द स्ट्रोमा. और पेरिस्ट्रोमियम जो होती है दैट इज़ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, वो बहुत ही स्मूथ होती है. और वो किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से, जो कि डिफरेंशियली परमिएबल है. और जो मेम्ब्रेन स्पेस है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. नेक्स्ट इज स्ट्रोमा, जो कलरलेस है, कोलॉइडल प्रोटीनेशियस है और हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स है. सिम्स लाइक अ वेरी हार्ड वर्ड्स बट इट्स वेरी सिंपल इन मीनिंग. सी, प्रोटीनेशियस है मीन्स क्या है? प्रोटीन्स या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें स्ट्रोमा में. एंड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स से मीन्स क्या होता है कि एनी सब्सटेंस कैन मूव फ्रीली इन स्ट्रोमा, वो वाटर लविंग होती है. सी, स्ट्रोमा इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड द थिंग्स दैट फ्रीली फ्लोट इन द फ्लूइड इज एंजाइम्स है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, होल थाइलाकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम है, राइबोसोम्स है और सर्कुलर डीएनए है. अब सर्कुलर डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है. वो क्यों होता है? वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. ओके, स्ट्रोमा में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एंजाइम होता है दैट इज़ रूबिस्को. सो इसके फंक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रोमा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कलरलेस होता है, कोलोइडल प्रोटीनेशियस होता है और हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स होता है. नेक्स्ट जो है वो थाइलाकोइड एंड ग्रैनम है. सो लेट्स सी अबाउट थाइलाकोइड. इट इज़ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ अ साइट फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि इनर मेम्ब्रेन सेल के इन्वेजिनेशन से बना होता है और कंसिस्ट ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एंड थाइलाकोइड लुमेन. ये इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है और उसी से अपने सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं. वो सिंगल यूनिट को हम थाइलाकोइड कहते हैं. थाइलाकोइड बाद में एक स्टॉक प्रोड्यूस करेगा और जिसे हम ग्रैनम कहते हैं. और ऐसे मल्टीपल ग्रैनम कंबाइनली जो थाइलाकोइड सेल है वही ज्वाइन करती है ग्रैनम को, जिसे हम ग्रैना कहते हैं. सो ग्रैनम मेड अप ऑफ 20 to 250 disc shaped thylakoid suspended in stroma. Obviously its diameter is 0.25 to 0.8 micron. So next is Stroma Lamella. What is Stroma Lamella? It is a membranous tube which connects grana. Now you know the grana and the difference between grana and granum. They contain CO2 fixing enzymes. It helps in rapid transport of material. Here you can see in the diagram two granum are connected by one lamella, Stroma Lamella, जो कि थाइलाकोइड ही है, which helps in rapid transport of material. Next is Quantosomes. What are Quantosomes? These are photosynthetic unit present on the inner surface of thylakoid membrane, which is discovered by Park and Begin. Here you can see thylakoid एक यूनिट दिखाया गया है जिसमें कि एंटीना मॉलिक्यूल है. इसे हम एनलार्ज करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स है डिफरेंट. सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, फिर होता है क्लोरोफिल बी एंड फिर होता है कैरोटेनॉइड. सो दिस इज़ द पर्टिकुलर साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस takes place. Let's see in short how photosynthesis occur. सबसे पहले सनलाइट से लाइट आएगी. सनलाइट ये 3 लेयर्स को क्रॉस करेगी. उसके बाद क्लाउड्स, डस्ट, पोल्यूटेंट्स को क्रॉस करके सरफेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स पे आएगी. फिर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, इन्हें क्रॉस करके सनलाइट आएगी आउटर सरफेस ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ग्रीन सेल, फिर साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन सेल, फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन स्ट्रोमा, then it will cross the thylakoid, then beta carotene, then chlorophyll B and chlorophyll A, and lastly photosystem and photosystem 2 ये reactions होगी और electrons जो है यहाँ से released होंगे. So that was all about today's lecture. We will see tomorrow about the chlorophyll pigments. Till then, see you.